Hey everyone, welcome back to our channel, and in this video we will discuss chapter 1 sexual reproduction in flowering plants biology. So in this video we will discuss its last part, which is apomixis and polyembryony. ठीक है, so let's get started. Right, apomixis and polyembryony. Although seeds in general are the products of fertilization, very right. जो seed है वो product है fertilization का. A few flowering plants, just some species like Asteraceae and grasses, ये have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. अब जो seeds जो produce होते हैं without fertilization, which is known as apomixis. ठीक है. What are the fruit production without fertilization? Without fertilization कौन होते हैं? पार्थेनोकार्पस fruits, right? तो इसका आंसर हमने दे दिया. Thus apomixis is a form of asexual reproduction. apomixis जो है वो asexual है, जो कि mimic करता है sexual. asexual है but it acts like sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. In such species, the diploid egg is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization. More often, as in many citrus and mango varieties, some as nuclear cells surrounded by the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develops into the embryo. In such species, each ovule contain many embryos. Occurrence of more than one embryo. अब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो which is known as polyembryony. Take out some seeds of orange and squeeze them. Observe many of the embryos in different sizes and shapes of each seed. Count the number of embryos in each seeds. What would the genetic nature of apomictic embryos? Can you call them clones? तो ये कह रहा है कि ऑरेंज को निकालो, उसके सीड्स निकालो, उसको स्वीज करो और उसकी शेप, साइज, ये सब देखो. Hybrid varieties of several of the fruits and vegetables crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. One of the problem of hybrids is that hybrid seeds have been to be produced every years. अब cultivation of hybrid seeds जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्टिविटी. अब एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड सीड्स की. जो हाइब्रिड सीड्स है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एवरी ईयर. If the seeds collected from the hybrids are sown, the plant and the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. अब अगर जो हाइब्रिड सीड्स हैं हम उनको सोन कर दें तो जो प्लांट्स हैं उनकी जो प्रोजेनी है वो सेग्रीगेट ही नहीं करेगी और मेंटेन नहीं करेगी हाइब्रिड कैरेक्टर्स को. जो प्रोडक्शन ऑफ है जो है हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली है और उनकी जो कॉस्ट है वो हाइब्रिड सीड्स की वो बहुत एक्सपेंसिव है फार्मर्स के लिए टू बाय दीज सीड्स एवरी ईयर. If these seed hybrids are made of apomixis, then there is no segregation of characters in the hybrid progeny. अगर जो hybrid seeds हैं ये made into apomictic seeds तो कोई segregation नहीं होगा characters का hybrid progeny में. और farmers can keep using these seeds to raise their new crop year after year, and he do not have to buy hybrid seeds every year. तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको हर साल नए सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ दे आर यूजिंग apomictic seeds, they can use these seeds year after year. Because the importance of apomixis in hybrid seed industries, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic seeds genes into hybrid varieties. तो अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हुए एपोमिक्टिक्स की हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में यहाँ पे इसके लिए एक्टिव रिसर्च चल रही है बहुत सारे लेबॉर्ट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक्स ऑफ एपोमिक्सिस को कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या जेनेटिक्स है एपोमिक्सिस की और एपोमिक्टिक जीन्स को वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ में. ठीक है, सो
That's all for today, guys. Hope you will like this video, share it with your friends, and do subscribe our channel, and stay tuned, guys. Bye bye.